Yes friends, very good morning everyone. चलिए कैन वी स्टार्ट. कोई होमवर्क था? नहीं था? ठीक है, आज से स्टार्ट करेंगे फिर होमवर्क. ठीक है, इसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे होमवर्क नहीं होने वाला था. हार्डली 1 2 3 4 क्वेश्चंस होमवर्क के लिए रहेंगे. ठीक है, ज्यादा नहीं. चलिए एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं व्हाट ऑल फॉर्मूलेज वी हैड सीन. ठीक, तो फर्स्ट हमने क्या देखा था? ऑपरेटिंग लेवरेज. ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या है? Contribution upon EBIT, and if there are two sets of data, percentage change in EBIT upon sales, then operating break-even point, fixed cost divided by contribution per unit, or fixed cost divided by PV ratio. यहां पे हमें क्या मिलेगा? लेवल ऑफ सेल्स at which EBIT will be 0, right? And ये फॉर्मूला यूज करके जो ऑपरेटिंग लेवरेज कैलकुलेट करेंगे, सपोज इट इज 2, what does it signifies? If sale changes by 1%, then EBIT will change by 2%, right? Then financial leverage. What was the formula for financial leverage? EBIT upon EBT. Suppose आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज ऑल्सो देयर, तो इन दैट केस फॉर्मूला कैसे होगा? EBIT अपॉन आइदर यू कैन टेक EBIT और EBT और EBIT माइनस इंटरेस्ट. दिस इज नथिंग बट EBT माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट, राइट? एंड एक और फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला था व्हेन टू सेट्स ऑफ डेटा इज बीन गिवन, परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT. इन तीन में से कोई भी फॉर्मूला यूज करके जो फाइनेंशियल लेवरेज आएगा, सपोज द वैल्यू इज 3, व्हाट डज इट सिग्निफाइज? अगर आपका EBIT 1% से चेंज हो रहा है तो EPS विल बी चेंजिंग बाय 3%, राइट? देन सेकेंड फॉर्मूला इससे रिलेटेड हमने देखा था फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट. व्हाट इज द फॉर्मूला? इंटरेस्ट. सपोज कैपिटल स्ट्रक्चर में सिर्फ डेट है तो ओनली इंटरेस्ट, एंड अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है तो प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट, राइट? देन कंबाइन द लेवरेज, ऑपरेटिंग लेवरेज इनटू फाइनेंशियल लेवरेज, और कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT, राइट? देन EBT होगा, चेक करिए. देन और दूसरा एक फॉर्मूला था परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स. यहां पे अगर आपका कंबाइंड लेवरेज से 6 है तो व्हाट डज इट सिग्निफाइज? सेल्स चेंजेस बाय 1%, EPS विल चेंज बाय 6%, राइट? एंड देन कंबाइंड ब्रेक इवन पॉइंट, यहां पे सारे फिक्स कॉस्ट कंसिडर करना है, दैट इज ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट. एंड ये सारे फिक्स कॉस्ट आपको कहां से रिकवर करना है? कंट्रीब्यूशन से, सो डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, राइट? तो यहां पे आपको मिलेगा सेल्स एट विच EPS विल बी 0, राइट? और यू कैन टेक PV रेशियो ओवर हियर, राइट? सो दिस मेनी फॉर्मुलेज वी हैड सीन सो फार. ओके, अगर मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करोगे तो ये सारे के सारे फॉर्मुलेज आपको याद रहेंगे. ओके, चलिए, तो कल हमने 2 एग्जाम्पल सॉल्व किए थे ना. नाउ रीड. मैंने नोट्स ऑलरेडी शेयर किया है ना, तो उसमें से ये 5th क्वेश्चन विल यू डू एज होमवर्क फॉर टुडे, एग्जैक्टली सेम एज क्वेश्चन नंबर 4. मैंने टीम EPA में नोट शेयर किया हुआ है टेलीग्राम चैनल पे. ओके, तो 5th क्वेश्चन मार्क एज होमवर्क. इट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू 4th क्वेश्चन. ओके,
read 12th question now. डीएफएल क्या होगा? डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में एक्सपेक्टेड है। ओके, विल यू ट्राई और शुड वी डिस्कस? ट्राई करेंगे? ट्राई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्राई जो आप कर रहे हो, इट इज ओनली फॉर द पर्पज ऑफ योर थिंकिंग प्रोसेस टू डेवलप। एक्सपेक्टेड नहीं है कि आपका करेक्ट आंसर आएगा। हमने जस्ट स्टार्ट किया हुआ है, 2 ही क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, तो एट दिस लेवल आई एम नॉट एट ऑल एक्सपेक्टिंग कि आपका आंसर करेक्ट आएगा। यू शुडंट बी ऑल्सो एक्सपेक्टिंग फ्रॉम योरसेल्फ कि करेक्ट आएगा। ओनली थिंग इज दैट कि आपको कुछ तो ट्राई करने की हैबिट अभी से लगनी चाहिए, इसलिए आप ट्राई कर रहे हो। ओके, जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनसे एक आंसर आया 5%। वन आंसर आई गॉट फ्रॉम ऑनलाइन स्टूडेंट 5%। परसेंटेज फॉल इन ईपीएस 5%, वन आंसर आई गॉट। बताइए, शुड वी डिस्कस?
कितना आ रहा है? Let it be wrong. You are doing it for the first time. I'm not expecting correct answer. I just want you to try. So that when we will discuss, आपको एक आइडिया आना चाहिए कि किस मैनर में आपको सोचना है. ओके कितना? 4%. Okay, one more answer. 4%. Any other answer? EPS 0 आ रहा है. Okay. 100%. One more answer. I got 100%. How much? 100%. I've got two answers. 100%. 100% is correct. 100% is correct. डिस्कस करें. अब देखिए IPS अगर 0 आ रहा है मीन्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग लेवल व्हेन एनी नंबर कम्स डाउन टू 0 तो इट इज 100%. बराबर. कोई भी नंबर 10 लाख से 0 तक आ रहा है मतलब 10 लाख से फॉल हो रहा है. So 10 lakh divided by 10 lakh into 100, that will be 100%, right? But how we can consider or solve? क्या दिया देखिए, अगर EBIT 1,30,000 तक ड्रॉप हो रहा है तो EPS का परसेंटेज फॉल पूछा है, right? यहाँ पे there will be some existing level of EBIT which we don't know, right? यहां से न्यू EBIT कितना हो रहा है? 1,30,000 हो रहा है, right? आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइनेंशियल लेवरेज इज 2, राइट? व्हाट डज दिस फाइनेंशियल लेवरेज सिग्निफाइज? हाँ जी, अगर EBIT 1% से फॉल हो तो EPS 2% से फॉल होगा, राइट? तो अगर मैं ये परसेंटेज फॉल कैलकुलेट करूं एक्चुअल में तो EPS का परसेंटेज फॉल कैलकुलेट कर सकता हूं, राइट? तो उसके लिए मुझे पहले ये फाइंड करना होगा कि एग्जिस्टिंग EBIT कितना है. बराबर. सो दैट आई कैन फाइंड परसेंटेज फॉल इन EBIT. सो आई विल बी गेटिंग परसेंटेज फॉल इन EPS. तो एग्जिस्टिंग EBIT कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है? फाइनेंशियल लेवरेज दिया हुआ है आपको 2, इंटरेस्ट दिया हुआ है. इंटरेस्ट कितना दिया है? 1 लाख. एंड प्रेफरेंस डिविडेंड दिया हुआ है 15,000. टैक्स रेट दिया हुआ है 50%. अब फाइनेंशियल लेवरेज का जब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो तो फॉर्मूला क्या था? EBIT अपॉन EBIT माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट, राइट? तो देखिए यहाँ पे फाइनेंशियल लेवरेज इज बीन गिवन, इंटरेस्ट इज बीन गिवन, प्रेफरेंस डिविडेंड इज बीन गिवन, टैक्स रेट इज बीन गिवन. सो आई कैन फाइंड EBIT, existing EBIT. So 2 is equal to, time being I am considering EBIT as x, divided by x minus 1 lakh minus 50,000 divided by 1 minus 0.50. Right, so divided by ये 1 minus 0.50 will be 0.50. 15,000 divided by 0.50 will be 30,000. So minus 1 lakh minus 30,000. So 2 is equal to x upon x minus 1 lakh 30,000. ये जब यहाँ पे जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा. 2 into x minus 1 lakh 30,000 is equal to x. So 2x minus 130 is equal to x. x लेफ्ट साइड में आएगा तो 2x minus x. x is equal to, सॉरी ये 2,60,000 आना चाहिए ना. 2,60,000 2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो x what I am getting is 2,60,000. मीन्स एग्जिस्टिंग EBIT कितना था? 2,60,000. अब 2,60,000 से 130 पे आ रहा है. बराबर. मतलब कितने अमाउंट से फॉल हुआ है? 1,30,000. तो परसेंटेज फॉल इन EBIT कितना है? 1,30,000 डिवाइडेड बाय बेस 2,60,000 इंटू 100, 50%, राइट? तो फ्रॉम एग्जिस्टिंग लेवल EBIT इज फॉलिंग बाय 50%. तो EPS का परसेंटेज फॉल कितना होना चाहिए? 100% इज द आंसर. इज इट राइट? एंड हाउ यू हैव कैलकुलेटेड? मतलब आपने EBIT पहले लिया 1,30,000 माइनस इंटरेस्ट 1 लाख, तो EBT 30,000. So minus tax 50%, that is 15,000. So EAT 15,000 less preference dividend 15,000. So EPS you are getting 0. So from any level EPS अगर 0 आ रहा है तो percentage fall 100 होगा. Either ways you can write, right? लेकिन यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? ये जो फाइनेंशियल लेवरेज का जो कंसेप्ट है इसका एप्लीकेशन कर रहे हो. ओके, सो दिस विल अपीयर टू बी मोर बेटर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनर. सपोज मैं एग्जामिनर हूं, वैसे तो दोनों आंसर करेक्ट है, दोनों आंसर में फुल मार्क्स मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जब आप फाइनेंशियल लेवरेज कंसेप्ट यूज करते हो तो एज एन एग्जामिनर आई अंडरस्टैंड कि आपको सिर्फ नंबर्स पता नहीं है, आपको कंसेप्ट भी पता है. ओके, सो डेफिनेटली इट विल क्रिएट अ गुड इंप्रेशन. ओके,
So can we write down? Example number 12, page number 26. First we will write given information. Financial leverage 2, interest 1 lakh, preference dividend 15,000, tax rate 50%. First, existing EBIT calculation. First working existing EBIT calculation. एग्जाम में भी आप इसी मैनर में प्रेजेंट करोगे. हर जो वर्किंग आप कर रहे हो उसको एक पहले हेडिंग दे दोगे एंड देन विल शो द वर्किंग. ओके, so write down the formula. Financial leverage is equal to EBIT upon EBIT minus interest minus preference dividend upon 1 minus tax rate. So 2 is equal to, टाइमिंग इसको x प्रेजेंट करता है, x minus 1 lakh minus 15,000 upon 1 minus 0.50. Have you written till here? Now second working. Calculation of percentage fall in EPS. In this first, financial leverage 2, percentage fall in EBIT. Sure thing. Existing था 2,60,000 minus new EBIT 1,30,000 divided by existing EBIT 260 into 100 is 50%. Therefore, percentage fall in EPS 100%. 2 into 50%. एग्जाम में जो मेन आंसर है उसको अंडरलाइन करेंगे सो दैट एग्जामिनर का फोकस मेन आंसर अगर दिखता है एंड देन इफ ही फाइंड्स इट इज करेक्ट तो डिटेल में वर्किंग चेक नहीं करेगा. ओके, आपके एक्सप्लेनेशन के लिए यहाँ पे लिखना है तो लिख सकते हो. फाइनेंशियल लेवरेज इज 2, दैट इज EBIT 1%, EPS 2%. If EBIT 50%, क्वेश्चन मार्क, तो क्रॉस मल्टीप्लाई. ये जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि मल्टीप्लाई हमने यहाँ पे डायरेक्टली क्यों किया. जब आप ये कंसेप्ट का एप्लीकेशन एग्जाम्पल में दिखाओगे तो इट विल बी मोर बेटर. ओके, डन. चलिए, दिस वाज 12th ना.
13th एंड 14th सॉल्व करेंगे आप अभी। 13th रफ में भले करिए, 13th एज वेल एज 14th। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स है वो भी कंप्लीट करके आंसर कमेंट करके बताएंगे। टोटल लेवरेज, combined leverage, combined leverage, and DFL is financial leverage. So can you tell me operating leverage कितना होगा यहाँ पे? हाँ 1.5 ना, हाँ 1.5, क्योंकि टोटल लेवरेज 3 दिया है, फाइनेंशियल लेवरेज 2 है, मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज 1.5 होगा। सो 2 into 1.5, टोटल लेवरेज इज 3। सॉल्व करिए 13th and 14th। I'll just come back।
Yes, friends, got the answer? 13 का आंसर बताइए. Sales 3,50,000. Okay, 3,20,000. सेल्स बता रहे हो ना, क्वेश्चन क्या था? सेल्स रेवेन्यू. पहले सेल्स रेवेन्यू बताइए. 350, 320, 380. और कोई है ऊपर की बोली लगाने वाला? ऑनलाइन आंसर, ऑनलाइन की स्टूडेंट श्रद्धा जी ने कहा है 5 लाख. तो 5 लाख दो आंसर है. 350 आई गेस बहुत लोगों का आंसर है. और कोई आंसर? 5 लाख, 3,50,000. Answer I guess should be 5 lakhs. 5 lakhs is correct. Let's check. I too haven't read. Total leverage 3, financial leverage 2. So degree of financial leverage 2, operating leverage is 1.5, combined leverage is 3, right? Company pays an annual interest of 60,000, preference share dividend 16,000. So total variable cost is 2 lakhs. Applicable income tax rate 60%. So first of all, I can calculate the level of EBIT based on this. बराबर. So financial leverage is equal to EBIT upon EBIT minus interest minus preference dividend upon 1 minus tax rate, right? So financial leverage is 2. EBIT timing I am assuming x minus interest is 60,000 minus 16,000 divided by 1 minus 0.60. बराबर ना? टैक्स रेट यहाँ पे 60% दिया हुआ है. तो when we simplify this, 16,000 divided by 0.40, 40,000. So this I should be getting 2 is equal to x upon x minus 1 lakh. So this will go on right hand side. So 2x minus 2 lakhs is equal to x. So x is equal to 2 lakhs. Are you getting EBIT as 2 lakhs? Right? Then अब हमें कैलकुलेट क्या करना है? सेल्स कैलकुलेट करना है. वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, राइट? तो देखिए, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, आई विल बी गेटिंग कंट्रीब्यूशन. अगर मेरे पास कंट्रीब्यूशन है, वेरिएबल कॉस्ट तो इन्होंने दिया हुआ है 2 लाख, तो आई विल बी एबल टू कैलकुलेट सेल्स. तो कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने के लिए मैं कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकता हूं? ऑपरेटिंग लेवरेज. ऑपरेटिंग लेवरेज इज कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी. तो 1.5 is equal to contribution upon EBIT is 2 lakhs. This will cross multiply. So 2 lakhs into 1.5. This will be 3 lakhs is equal to contribution. So contribution यहाँ पे आया 3 lakhs. तो sales कितना होना चाहिए? 5 lakhs. So 5 lakhs minus 2 lakhs, contribution 3 lakhs will be the correct, right? And EBIT कितना है आपका? 2 lakhs. तो यहाँ पे बीच में क्या होगा? फिक्स्ड कॉस्ट. तो फिक्स्ड कॉस्ट कितना होना चाहिए? 1 lakh. That's it. These were the two answers which were required, right? So sales 5 lakhs and fixed cost 1 lakh is correct. चलिए नेक्स्ट सॉल्व किया है या पहले ये कंप्लीट कर ले? 13 भी कर रहे थे अभी तक. ओके, चलिए पहले 13 लिख ले. फिर given information, financial leverage 2, total leverage 3. Therefore page number 26. Operating leverage, total leverage upon financial leverage, that is 1.5. Tax rate 60%. So first working we can show calculation of EBIT. Financial leverage is equal to EBIT upon EBIT minus interest minus preference dividend upon 1 minus tax rate. So 2 is equal to x upon x minus 60,000 minus 16,000 divided by 1 minus 0.60. 2 is equal to x upon x minus 1 lakh. This will be 2x minus 2 lakhs is equal to x. Therefore x, that is EBIT, is 2 lakhs. Complete this working first of all.
Then now second working, contribution. Operating leverage is equal to contribution upon EBIT. 1.5 is equal to contribution upon 2 lakhs. Contribution we are getting is 3 lakhs. So third working, we can write sales. We can write an equation, contribution is equal to sales minus variable cost. Therefore sales is equal to contribution plus variable cost. 3 lakhs plus contribution, variable cost was 2 lakhs. Therefore sales is equal to rupees 5 lakhs. You will be writing working one below the other only. Okay. Written so far? This way you calculate sales. And एक और information चाहिए था fixed cost. So fourth working, fixed cost. So EBIT is equal to contribution minus fixed cost. Therefore fixed cost is equal to contribution minus EBIT. 3 lakhs minus 2 lakhs. Then next example. XYZ Limited manufactures and sells a typical electronic toy. Selling price given 20, variable cost given 10. Operating fixed cost is been given 5 lakhs. Interest is 2.5 lakhs and financial leverage is 2. What is operating leverage and sales volume respectively? Operating leverage का फॉर्मूला क्या है? Contribution upon EBIT, राइट? अब देखिए सेल्स दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट दिया है, मतलब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मिलेगा, लेकिन सेल्स वॉल्यूम पता नहीं, तो टोटल कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट नहीं कर सकते। लेकिन क्या ऑपरेटिंग लेवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं? अब यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज कैलकुलेट करने के लिए कंट्रीब्यूशन एंड ईबीआईटी होना चाहिए। अब ईबीआईटी आई कैन कैलकुलेट बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल लेवरेज, राइट? तो फाइनेंशियल लेवरेज इज कैलकुलेटेड एज ईबीआईटी अपॉन, कैन आई राइट ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट ईबीटी। यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो है नहीं, फाइनेंशियल लेवरेज दिया हुआ है, इंटरेस्ट दिया है, तो आई कैन कैलकुलेट ईबीआईटी, राइट? सो कैन वी फर्स्ट कैलकुलेट दिस वर्किंग? ये क्वेश्चन साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, ओके? चलिए फर्स्ट 14 question, page number 26 only. Write down the given information. Selling price rupees 20, variable cost rupees 10 per unit, then operating fixed cost दिया आपको, operating fixed cost rupees 5 lakhs, इंटरेस्ट दिया है 2.5 lakhs, फाइनेंशियल लेवरेज 2. This much information has been given. So first working, calculation of EBIT. एग्जाम में टाइम कम हो तो सिर्फ EBIT लिख सकते हो, हेडिंग क्या कैलकुलेशन कर रहे हो उतना लिखा तो भी चलेगा, ओके? नाउ फॉर EBIT विल बी यूजिंग फाइनेंशियल लेवरेज. फाइनेंशियल लेवरेज इज इक्वल टू EBIT अपॉन EBT.
EBT मीन्स EBIT माइनस इंटरेस्ट। अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता तो लिखते यहां पे माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट। So financial leverage 2 is equal to, pending this I am considering as x minus interest is 2,50,000। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 2x माइनस 5 लाख इज इक्वल टू x लेफ्ट में आएगा तो 2x माइनस x रहेगा एंड 5 लाख राइट हैंड से आएगा। देयरफॉर EBIT रुपीज 5 लाख। अब आपको कैलकुलेट क्या करना था, ऑपरेटिंग लेवरेज। अब ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। हमें EBIT मिला तो अब कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना होगा। कैन यू टेल मी व्हाट शुड बी द कंट्रीब्यूशन? कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए? एनी आंसर? मेरे पास ये सारे इंफॉर्मेशन हमने लिखा है इसलिए यू कैन सी फ्रॉम योर बुक, बट स्टिल कंट्रीब्यूशन बताइए मुझे आप। 10 लाख एग्जैक्टली, सिंपल 10 लाख ही तो है ना। यस, तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट यू आर गेटिंग कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट यू शुड बी गेटिंग EBIT। EBIT हमने अभी कैलकुलेट किया 5 लाख, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट 5 लाख क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए? 10 लाख। मेनी टाइम्स इन एफएम इट हैपेंस कि सिंपल कैलकुलेशन होता है बट यू आर यूज्ड टू सो कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन की सिंपल कैलकुलेशन भूल जाते हैं, राइट? तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन 10 लाख। नाउ सेल्स वॉल्यूम selling price per unit is 20, variable cost per unit is 10, so contribution per unit is 10, per unit contribution 10, total contribution 10 lakh, so number of units कितने बेचे रहेंगे अपने? 1 lakh, that will be the sales volume in units, right? चलिए, so second working we can write calculation of contribution, calculation of contribution. We can simply write equation EBIT is equal to contribution minus fixed cost. EBIT is equal to contribution minus fixed cost. Therefore contribution is equal to EBIT plus fixed cost. Contribution 10 lakhs. Completed. Now I can calculate operating leverage. Operating leverage, you can write first heading calculation of operating leverage. Operating leverage is calculated as contribution upon EBIT. जब आप लिख रहे हो पूरा contribution लिखेंगे, C divided by EBIT नहीं लिखेंगे, ओके? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मुझे एग्जाम देनी नहीं है, सो आई कैन राइट, आप पूरा कंट्रीब्यूशन कीजिए। सो 10 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख, ऑपरेटिंग लेवरेज इज 2। एंड हमें एक और वर्किंग सेल्स वॉल्यूम चाहिए था इन यूनिट्स। क्वेश्चन में सेल्स वॉल्यूम, तो यूनिट्स एज वेल एज रुपीज में कैलकुलेट करते हैं। कैन आई राइट दिस एज टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट? सो टोटल कंट्रीब्यूशन 10 lakhs and contribution per unit is sales, that is 20 minus 10, so 10 lakhs divided by 10, 1 lakh units. Therefore sales volume in rupees 1 lakh into 20, selling price per unit 20 lakhs है ना?
कंप्लीटेड? चलिए, कैन यू प्रोसीड? 15th क्वेश्चन, ये अभी आप सॉल्व करेंगे। सिर्फ 15th है, 16 तो अभी तक हमने डिस्कस किया ही नहीं है। लेट मी नो इफ यू गॉट एनी आंसर। अभी तो सिर्फ हमने गिवन लिखा है। वन 187,500, this is debt na? Okay, one answer I got 1,87,500. Any other answer?
62,500. One more answer I got 62,500. 62,500. 375. 3,75,000. Okay. Any other? I got two answers: 62,500, 187,500, and 375. 93,750. ऑनलाइन की स्टूडेंट ने भी आंसर किया श्रद्धा जी ने 62,500. थ्री आंसर 62,500. So majority 62,500. Majority wins. 62,500 is correct. चलिए डिस्कस करें. क्या दिया देखिए, हमें डेट अमाउंट कैलकुलेट करना है एंड इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है. ओके, बताइए अगर आपको इंटरेस्ट अमाउंट मिले, से फॉर एग्जांपल डेट एक्स है, उस पे 16% एंड से इंटरेस्ट इज से सपोज 10,000, तो कैन वी कैलकुलेट दिस डेट सिंपली 10,000 डिवाइडेड बाय 16%. मतलब बेसिकली मुझे कैलकुलेट क्या करना है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, अमाउंट, राइट. अब इंटरेस्ट कैलकुलेशन, जो अमाउंट कैलकुलेट करना है, उसका संबंध ऑपरेटिंग लेवरेज से आएगा या फाइनेंशियल लेवरेज से आएगा? फाइनेंशियल लेवरेज. सो फाइनेंशियल लेवरेज इज इक्वल टू ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, राइट. फाइनेंशियल लेवरेज दिया हुआ है क्वेश्चन में, दिस इज ऑपरेटिंग लेवरेज दिया, टोटल लेवरेज मतलब 1.5 होगा, बराबर. ईबीआईटी वी डोंट नो एंड इंटरेस्ट वी ऑल्सो डोंट नो. तो अगर दो इंफॉर्मेशन पता नहीं तो ये फॉर्मूला मैं पहले यूज नहीं कर सकता. लेकिन क्या मैं ईबीआईटी कैलकुलेट कर सकता हूं? फॉर दैट ऑपरेटिंग लेवरेज इज बीन गिवन. नाउ दिस इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी. ऑपरेटिंग लेवरेज आपको दिया हुआ है, दैट इज 2, एंड कंट्रीब्यूशन के लिए इंफॉर्मेशन देखिए क्या दिया है. सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 12 एंड वेरिएबल कॉस्ट दिया है 6. तो पर यूनिट कंट्रीब्यूशन 6, नंबर ऑफ यूनिट्स भी दिया हुआ है 10,000. सो कंट्रीब्यूशन इज बीन गिवन 60,000 डिवाइडेड बाय ईबीआईटी. मींस आई कैन कैलकुलेट ईबीआईटी. मतलब बेसिकली मेरा सीक्वेंस क्या होगा, पहले मुझे ईबीआईटी कैलकुलेट करना होगा यूजिंग ऑपरेटिंग लेवरेज. यूजिंग दिस ईबीआईटी I'll be calculating, or using formula financial leverage, I'll be calculating interest, and once I get interest I can calculate debt amount. Have you understood this? Can we write down? Okay. Question number 15, same page number 26. We'll write down the given information. Operating leverage 2, total leverage 3, therefore financial leverage 1.5, 3 upon 2. Sales unit 10,000. Selling price per unit 12. Variable cost per unit 6. Therefore, contribution per unit 6, 12 minus 6. एंड आपको इंटरेस्ट रेट भी दिया हुआ है 16%. यहाँ पे टोटल कंट्रीब्यूशन भी लिख सकते हैं. टोटल कंट्रीब्यूशन 6 into 10,000, that is 60,000. So this all information is been given. Calculation of EBIT. First working, write down calculation of EBIT. Operating leverage is equal to EBIT upon contribution. सॉरी उल्टा लिखा मैंने, ऐसा हो सकता है आपका, इसलिए याद रखें, ठीक है. कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT. सो 2 इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन कितना है 60,000 डिवाइडेड बाय EBIT. Therefore EBIT is equal to 60,000 upon 2. Then second working below this,
calculation of interest amount. Financial leverage is equal to EBIT upon EBIT minus interest. So 1.5 equal to 30,000 divided by 30,000 minus interest. So this will go on left hand side, it will become multiplication. So 45,000 minus 1.5 interest is equal to 30,000. So 1.5 interest is equal to 15,000. Therefore interest is equal to 15,000 divided by 1.5. That is 10,000. Then, and third, calculation of debt. This I can write as interest amount divided by interest rate is 10,000 divided by 16%. So debt is equal to rupees 62,500. Completed? Has everyone completed? अब 16 क्वेश्चन के लिए कंसेप्ट है बीटा, जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया, सो वी आर कीपिंग इट पेंडिंग. एक काम करिए, 11th क्वेश्चन होमवर्क के लिए मार्क करिए. सो मैक्सिमम देयर विल बी 2 होमवर्क्स ओनली, उससे ज्यादा कभी अपना होमवर्क नहीं होगा. ओके, एक 5th क्वेश्चन एंड 11th क्वेश्चन, देयर आर ओनली 2 क्वेश्चन एज होमवर्क. ओके, read 9th question. This type of question has been asked several times in your exam. 9th and 6th, n number of times the question has been asked. Have you read? हमें बस ऑपरेटिंग लेवरेज कैलकुलेट करना है. नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ऑपरेटिंग लेवरेज? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी. अब यहां पे क्या कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है? सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 14, 9 इज अ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 5 रुपए, एंड देन नंबर ऑफ यूनिट दिया हुआ है. सो कंट्रीब्यूशन आई कैन डायरेक्टली कैलकुलेट. क्या ईबीआईटी दिया हुआ है? तो ईबीआईटी कैलकुलेट कैसे करेंगे? अच्छा, मुझे आप अच्छा, ब्रेक इवन पॉइंट से फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे. कैन यू टेल मी व्हाट शुड बी द फिक्स्ड कॉस्ट? 10,000 एग्जैक्टली. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ब्रेक इवन पॉइंट? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. अब ब्रेक इवन पॉइंट आपको यहां पे पहले तो यूनिट्स में दिया हुआ है, सो डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, बराबर. सो 2000
इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट वी डोंट नो बट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमें पता है 5, तो फिक्स्ड कॉस्ट विल बी, दिस विल गो ऑन लेफ्ट हैंड साइड, इट विल बिकम मल्टीप्लिकेशन 10,000, तो फिक्स्ड कॉस्ट इज 10,000, राइट। तो आपने कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट किया था, उसमें से फिक्स कॉस्ट लेस करो, विल बी गेटिंग EBIT, तो कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT विल बी गेटिंग ऑपरेटिंग लेवरेज, सो दिस वाज वेरी सिंपल। एंड यहाँ पे आपको कमेंट भी करना है, ओके। कैन यू टेल मी, आपको 2 कॉलम्स में आंसर करना होगा ना, 2500 यूनिट्स एंड 3000 यूनिट्स, तो बताइए ऑपरेटिंग लेवरेज हायर कहां पे होगा, 2500 यूनिट्स पे या 3000 पे? 2500 यूनिट्स पे, राइट। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, जैसे जैसे आपका सेल्स बढ़ता जाएगा आपका रिस्क कम हो रहा है, राइट। सो ऑपरेटिंग लेवरेज विल बी लोअर ओवर ईयर एंड हायर ओवर ईयर, तो आपको यही कमेंट करना है, ओके। Why there is a difference in operating leverage? At different level of sales there is a different risk, as and how sales rises risk reduces, therefore operating leverage is lower over here. This is what we'll be writing comment, okay. But first working we have to show for fixed cost. Can we write down? Write down question number 9, page number 25. Mark this question as very important. इनफैक्ट सारे क्वेश्चन जो अभी हम सॉल्व कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सिमिलर टाइप क्वेश्चन यू विल एक्सपेक्ट, ओके। कैलकुलेशन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन contribution per unit. So 2000 units is equal to fixed cost upon 14 minus 9. So fixed cost is 10,000. Then second working, calculation of operating leverage. So we'll tabulate the calculation, serial number, particulars, right hand side sales volume, and in it 2 columns, 2500 and 3000. Serial number A, contribution at the rate ₹5, यहाँ पे 2500 into 5। सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट अब लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से हम स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। तो 2500 into 5 12,500 एंड यहाँ पे 3000 into 5 15,000 लेस फिक्स्ड कॉस्ट 10,000 10,000। So we will be getting EBIT. So 2,500 and 5,000. Operating leverage. What is the formula? Contribution upon EBIT. So यहाँ पे 5 and यहाँ पे 3. Isn't this example very simple? अब हमें कमेंट में क्या क्या लिखना है? इन्फरेंस ये नंबर का बराबर व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम ऑपरेटिंग लेवरेज। अब इन्फरेंस मतलब क्या है? अगर इस लेवल पे ऑपरेटिंग लेवरेज 5, इसका मीनिंग यहां से मतलब ये 2500 यूनिट से अगर सेल्स आपका 1% चेंज होता है एनी डायरेक्शन हायर और लोअर, आपका EBIT 5% से चेंज होगा। एंड सिमिलरली
एट सेल्स लेवल ऑफ 3000 अगर मेरा सेल्स लेवल 1% से चेंज होता है तो मेरा ईबीआईटी 3% से चेंज होगा. दिस इज इन्फरेंस. एंड देन सेकेंड पॉइंट हमें लिखना है कि डिफरेंस क्यों है. So here we'll be writing as and how sales level rises, operating risk reduces, therefore operating leverage will fall down. So can we write down the comments, or simply we'll write notes/inference. In its first point, at sales volume of 2500 units, the operating leverage is 5. It means if sales changes by 1% from this level, EBIT will change by 5%. EBIT will change by 5%. Second, at sales volume of 3000 units, operating leverage is 3. It signifies if sales changes by 1% from this level, EBIT will change by 3%. EBIT will change by 3%. Third point, as sales increases from 2500 to 3000 units, operating leverage falls from 5 to 3. This is because as sales rises, operating risk reduces. And thus operating leverage falls. Write down sales and operating leverage are inversely related. Sales and operating leverage are inversely related. Done? I hope you understood this example. So 11th question and 5th question will be the homework. We'll discuss tomorrow, and tomorrow we'll continue with some more advanced questions. Okay, we'll conclude for now.